Hello everyone, this is ProfSanaAnsari, and today we are going to discuss about a very important question, that is provisions and features of Consumer Protection Act 1986. I would like to inform you there are total two Consumers Protection Act. The first one is 1986 and the second one, which is very updated one we can say, and that is 2019. So friends, in this video, I'm going to cover the topic which is related to the Consumer Protection Act 1986, and definitely in my next video, I'm going to share the details about the Consumer Protection Act 2019. So let's start with our today's topic, that is Consumer Protection Act 1986. Friends, I would like to inform you the consumers rights we have already discussed in my previous video. If you want to watch that videos too, so I'm going to share the link in the description box so you can watch from there. But before going to touch this topic, just recollect the all consumers rights. Okay, so total we have 6 consumers rights and 2 more rights has updated recently according to our constitution. The 6 consumers rights are right to safety, right to choose, right to information, right to hear, right to redressal, right to consumer education, and the 2 new more, that is right to basic needs and right to healthy environment. So all these things and all these are the consumers rights. Okay, so recently the Consumers Protection Act has updated, which is 2019, but in this video we are going to learn about the old one, but it is very important question, the Consumer Protection Act 1986. See, basically the Consumers Protection Act has made but just because for the protection of the consumers' rights and to secure the interest and to promote the interest of consumers. Okay, so we can say that the CPA 1986 is specially made just because to promote and to protect the consumers' rights. So let's start with the CPA 1986. The main features and provisions of the act are, first one we have, that is coverage in India. So I can say this act extends to whole India except the state Jammu and Kashmir. मतलब ये जो एक्ट है वो पूरे होल इंडिया के लिए एग्जिस्ट करता है, पूरे होल इंडिया में एक्सटेंड करता है, लेकिन एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर. मतलब ये जो एक्ट है गुड्स एंड सर्विस के प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये एक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर के अलावा इंडिया के पूरे होल स्टेट में ये अप्लीकेबल किया जाएगा. Then we have next point, that is applicability. Exactly, the act is applies to all goods and services except the exempted goods from the central government. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर रखा है सो वो एक एक्सेप्शन केस है. अदरवाइज जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं या यूटिलाइज या कंज्यूम किए जाते हैं, उन सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे ये एक्ट अप्लाई होता है. दैट इज़ वाई द पॉइंट इज एप्लीकेबिलिटी. Then we have next point, that is consumer. So who is consumer? According to the provisions and features of Consumer Protection Act 1986, consumer means any person who buy the goods for a consideration or who hires or avails any services on the basis of consideration. इसका मतलब ये हुआ, कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स को खरीद रहा है मनीज एंड मनीज वर्थ पे, या गुड्स को हायर कर रहा है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए या क्रेडिट बेस पे लेना, इसे हम कहते हैं कंज्यूमर, हु विल डेफिनेटली और अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो इसे हम कहते हैं कंज्यूमर. देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंप्लेनेंट. कंप्लेनेंट ये होता है कि कोई भी पर्सन जो कंप्लेन कर रहा है उसे हम कहते हैं कंप्लेनेंट. और एनी वॉलेंट्री कंज्यूमर और ग्रुप ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन जो होता है, कंज्यूमर एसोसिएशंस जो रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. द ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स एंड एनी वॉलेंट्री कंज्यूमर कैन मेक अ कंप्लेंट अगेंस्ट ऑफ एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. सो हु इज कॉल्ड एज कंप्लेनेंट. मतलब जो भी कंप्लेन कर रहा है हम उसे अल्टीमेटली क्या कहते हैं, कंप्लेनेंट कहते हैं. देन वी हैव कंप्लेंट. अब कंप्लेंट क्या होती है? अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, गलत तरीके से हम मिसलीड करके गुड्स को बेचा जा रहा है, कोई प्रोडक्ट्स और आइटम्स है जो डिफेक्टिव है या कोई सर्विसेज है जिसमें डेफिशिएंसी दिखाई दे रहा है, अगर कहीं पर प्राइस बहुत ज़्यादा और एक्सेस चार्ज किया जा रहा है, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें केमिकल्स एंड हैजर्डस प्रोडक्ट को यूज़ किया जा रहा है विच इज़ डेंजरस टू द लाइफ. सो ऐसे सारे सिनारियो में अ पर्सन कैन मेक अ कंप्लेंट और द पर्सन विल कॉल्ड एज कंप्लेनेंट.
ओके, देन वी हैव डिस्प्यूट्स. अगर डिस्प्यूट्स होता है लाइक कंज्यूमर डिस्प्यूट्स मीन्स अ डिस्प्यूट वेयर द पर्सन अगेंस्ट होम कंप्लेंट हैज़ बीन मेड. किसी के अगेंस्ट इफ यू आर डूइंग कंप्लेंट इज नथिंग बट द डिस्प्यूट्स को राइज करना या रेज करना. Then we have next one that is recognition of consumers rights. consumers rights का recognition करना मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू ही, अगर आपको याद हो जब मैंने राइट्स ऑफ कंज्यूमर पढ़ाया था मेरी पिछली वीडियो में, सो मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 of the Consumer Protection Act 86, we got all these rights of consumers, which include right to choice, right to safety, right to herd, right to redress, right to consumer education, right to basic needs, right to healthy environment, etc. Okay, so the Consumer Protection Act 1986 has recognized the consumers' rights. Okay, then we have next that is establishment of consumer dispute redressal agencies. एक्चुअली ये है कि यहाँ पर CPA 1986 के द्वारा कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स को रिड्रेस करने के लिए, मतलब कंज्यूमर की जो भी डिस्प्यूट होती है या कंप्लेंट होती है उसको रिड्रेस करना इज मीन उसको करेक्ट करने के लिए कुछ एजेंसीज यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की गई है. सो टोटल वी हैव 3 एजेंसीज. वी कैन से डिस्ट्रिक्ट फोरम एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन एट अ स्टेट लेवल, नेशनल कमीशन एट अ नेशनल लेवल. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल कमीशन के अमाउंट फिक्स्ड है कि वो इतने अमाउंट तक का रेंज का अगर गुड्स एंड सर्विसेज का डिफेक्टिवनेस या डिस्प्यूट आ रहा है तो उसको रेड्रेस करेंगे. डिस्ट्रिक्ट फोरम डील करती है 20 अप टू 20 lakhs तक, मतलब द अमाउंट शुड नॉट बी एक्सीड्स ऑफ ₹20 lakhs. मतलब 20 lakhs तक का अगर कोई कंप्लेंट आ रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई डैमेज है या उसमें कुछ हैजर्डस केमिकल यूज़ है या गलत तरीके से बेचा गया है, सो वो सिनारियो में डिस्ट्रिक्ट फोरम कंज्यूमर मूव ऑन कर सकता है. देन स्टेट कमीशन के लिए अगर 20 lakhs से लेकर 1 crore और इट शुड नॉट बी एक्सीड्स ऑफ ₹1 crore. ठीक है, सो वी कैन गो टू द state commission and the amount of the goods and services of the dispute amount for the goods and services is rupees, and we can say the above ₹1 crore, so consumer can move to the national commission. So friends, we have completed this topic here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. If you want to watch the next video which I am going to share with you, that is the Consumer Protection Act 2019, so please do like and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to support me. Keep supporting, keep watching. Bye bye, have a nice day, take care.